No, I didn't. I didn't. Come on. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इन अ बैग विद फहद। और आज का जो व्लॉग है वो है अलगार्व के बारे में। यहाँ का मैं व्लॉग ऑलरेडी एक मरतबा बना चुका हूँ, मगर दोबारा बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, और वो ये था कि इस मरतबा लोग नए थे, जगहें नहीं थी और वाइब्स बहुत ही चिल थी। तो बाकी प्लानों की तरह ये भी प्लान हमारा काफ़ी रैंडम था, और अपने आदत से मजबूर मैं कभी किसी प्लान को ना नहीं कह सकता। तो मैं अपने दोस्तों के साथ इस सफ़र पे निकल पड़ा, और जो पहली जगह थी वो थी पोंता दे पिदादे। Sun is coming up, are you ready to go? We can take a ride, we can take it slow. Your will is my law, I'ma let you be the boss, 'cause I'll go where you go. तो पूरा दिन बीच पे चिल करने के बाद और क्लिफ्स को एक्सप्लोर करने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि आज इतना ही काफ़ी है। लेट्स जस्ट गो होम, चिल ओवर देयर, हैव सम फूड, एंड बाकी की कल देखेंगे। Alright, who is the chef of this Honduran night? Mickey, Timmy, and I. Alright. Why are you gay? We got the guns as well. Pa 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 pa. In case someone wants to fuck with us. भाई मैं आपको इतना सा बताता चलूँ कि हमने जितनी मरतबा भी एयरबीएनबी करवाया पोर्चुगल में, ये घर उनमें से सबसे बेस्ट था, और जिसकी वजह से हमारा ना पूल में से निकलने का दिल चाह रहा था, ना घर से निकलने का दिल चाह रहा था। तो हमने पूरा दिन बेसिकली वहीं चिल किया और कुछ भी नहीं किया, और शाम में हम सिर्फ और सिर्फ सनसेट देखने के लिए गए। Well, then the second night, Timmy and Mickey cooked a Hungarian food for us, and it was delicious. There's potato, chicken, but originally it was before. But because of someone, we put chicken instead of pork. Oh, thank you so much. I know who someone is. Open that. Open that. Oh, fuck me. Thank you here, guys. I hope everybody likes our food, and especially special thanks to Alejandro. That even though he has no money, he has like all his credit card is stolen, and he was banned from coming here, but he is here. My boy's back. We love you guys. We love everybody. Love you too, man. Love you too. तीसरा और आखिरी दिन है इस एयरबीएनबी में, और मैं काफ़ी सैड फील कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा आखिरी वेकेशन होगा पोर्चुगल में, बिकॉज़ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह मैं पोर्चुगल से निकलूँ और इस्तांबुल जाऊँ, मगर सारी फ़्लाइट्स बंद हैं। बट एनीवेज़, यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती भाई। अभी हम जाएंगे फ़ारो, शायद उसके बाद वही उसी केव्स वाले बीच पे जाएंगे, और मैं उधर फिर अपने आप को चोट लगवाऊँगा मोस्ट प्रॉबली, और फिर वहाँ से हम लोग 2 घंटे की ड्राइव करके लिस्बन जाएंगे और फिर घर जाके सोएंगे। तो ये प्लान है। ओके, लास्ट थॉट्स Thoughts about what? अबाउट दिस हाउस? And it was nice. It's always too quick. Passes by way too fast. Yeah, I love this place. I love you guys, and I'm so happy that we could make it. And what do you say, Alejandro? Cool. Awesome. Awesome. That's it. That's sad, man. You just finished the conversation in 2 words. Gabroni. Was it it? Was it it? Pizza gay brony. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. तीसरा और आखिरी दिन हम लोग देखने गए साओ लोरेंसो चर्च, जो अंदर से सिर्फ टाइल्स से बना हुआ है, एंड दिस इज़ अ 16th सेंचुरी चर्च, और ये इतना कोई खूबसूरत था भाई, मैं आपको नहीं बता सकता। मगर अंदर तस्वीरें लेने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन हमने छुप छुपा कर तस्वीरें ली और वीडियो बनाई। चेक इट आउट। Yo, how was the church? It's gonna like
Oh, the church was bombed, man. What do you think of church? Really beautiful. It's amazing. But I couldn't see such nice pictures like this FAHAD. Nobody else. We are at Marina Beach और इसको जो है दुनिया के top 100 beaches में award दिया गया है. Gabe, why didn't you get me an ice cream, man? Fuck fake friends, that's why. Oh, really? I'm only real with my real niggas. Ice cream for them. इसके बाद हम लोग गए अल्गार्वियन केव्स. तो अगर आपने मेरा पहला व्लॉग नहीं देखा और नहीं जानते कि पहले हमारे साथ क्या हैंड हुआ था, तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो एंड चेक दैट व्लॉग आउट. मगर दिस टाइम द वेव्स वर प्रीटी calm and chill and it was a nice experience. There's FAHAD coming towards us in a donut. I don't know how I'm gonna go back. Look at this. Yeah. You're fucked. So here's the thing. I didn't swim that much in my entire life. I swam so much that my feet, my legs, and my arms are not working anymore. Facts. These are facts. First time going there, Okay. so I took Gabe and Gabe took FAHAD, which was a mistake. Like the thing is, I wasn't even planning to go, honestly, because I have been to the caves, and even with the inflatable, I went there. But I don't know why Gabe asked me, and I said yes. Because you never say no. Yeah, I never say no. I don't like saying no. We were sitting backwards on kayak. On top of that, was a weight imbalance. Like I was supposed to sit like behind, but I was sitting at the front, and I was sitting in the middle, and the Gabe was sitting behind. Yeah. Which fucked up the balance, and eventually we fell in the sea, and we didn't end up going there. Yeah. And I'm so sorry, Anna, that you couldn't make it Yeah. to the So caves. we were. तो भाई मेरा होता है व्लॉग यहाँ ख़त्म. और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लीव अ थम्स अप, और सब्सक्राइब का भी वहीं कहीं बटन होता है, दिल चाहे तो वो भी दबा देना, और बेल आइकॉन को तो ज़रूरी दबाना अगर सब्सक्राइब दबाओ तो इंशाल्लाह होती है मुलाकात. सही है भाई, तो मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद. सही है, पीस.